हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम अगेन इन योर क्लास. In previous video we completed our chapter. Today it's time to picture composition. Student, अब आप पूछेंगे कि मैम ये पिक्चर कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता. आपको पिक्चर का नेम सुनते ही आपके माइंड में ढेर सारी चीजें रिवॉल्व कर रही होंगी, है ना? तो स्टूडेंट्स, पिक्चर कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट to express your views by observing the ideas given in the picture. By observing the ideas given in the pictures, it can be expressed verbally or by writing. That means picture composition एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम पिक्चर को ऑब्जर्व, आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं. ये आइडियाज ओरल या फिर रिटन भी हो सकते हैं. स्टूडेंट्स, दिस पिक्चर composition will help you to boost your writing skills. Today we will frame some sentences by looking at the picture. स्टूडेंट्स, कभी भी पिक्चर कॉम्पोजिशन को अटेम्प्ट करना हो तो आपको कुछ रूल्स को अपने माइंड में रखना होगा. एंड दोज आर एज फॉलोज. रूल नंबर 1. फर्स्ट इज ऑब्जर्व. जब भी आपको कोई पिक्चर दी जाती है तो आपको उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है और उसमें से दी गई डिटेल्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है. रूल नंबर 2. पॉइंट आउट एंड आइडेंटिफाई. मीन्स आपको पिक्चर में दी गई ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना है और आइडेंटिफाई करना है. और यू शुड नो व्हाट आर दीज थिंग्स गिवन इन द पिक्चर. रूल नंबर 3. फ्रेम sentences. Students, after identifying the things given in the picture, you will start framing sentences. That means आपको सेंटेंस को राइट करना स्टार्ट करना होगा. नाउ रूल नंबर 4 is check errors. Students, after writing sentences, आपको errors means mistakes को find out करना है. आपको चेक करना है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है. Sometimes we make mistakes और फिर हम अपनी गलतियों को खुद ही आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए अब हम एक पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं. नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स. दिस इज द पिक्चर ऑफ प्लेग्राउंड. सो एज पर द रूल number 1, firstly observe the picture carefully and then according to the rules. Number 2, now you have identified the things. अब आप पिक्चर को देखिए और उसको आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं. Here you can see there are children, there are many beautiful flowers. You can also see swings. You can also see the cloud, the sun. Tell me yes or no. अब आप कहेंगे yes ma'am. So now let's point out how many boys are there. 1, 2 या 3. There are 3 boys. 1, 2, 3. And how many girls are there? There are 2 girls. 1, 2. In the same way, I hope you have identified the object in the picture. Now let's start framing sentences. I think you all are ready to frame the sentence. So let's start. This is a picture of a playground. ये किसकी पिक्चर है? Yes, this is a picture of playground. So tell me how many children are there? कितने बच्चे हैं? There are 5 children. 1, 2, 3, 4 and 5. Now, can you tell me what are they doing? They are playing.
Now let's see how many flowers are there. There are 10 flowers. Look here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Can you tell me where is the sun? It is on the ground. Nahi na. It is in the sky. The sun is in the sky. Let's check कि हमारा sentence right है या wrong. तो चलिए हम इसको फिर से check करते हैं. तो sentence number 1, this is a picture of a playground. Number 2, there are 5 children. Number 3, they are playing. Number 4, there are 10 flowers. And the last sentence is, the sun is in the sky. Our sentences are grammatically correct. And now our picture composition is ready. So kids, I hope you have understood all the things regarding to the picture composition. चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा आज का होमवर्क क्या है. And the homework is based on picture composition. And the question is, look at the picture carefully and write 5 sentences about it. आपको पिक्चर देखना है और इसको ऑब्जर्व करके 5 sentences लिखने हैं. So students, follow the rules and frame sentences. We will meet again in the next video. Take care. Bye. Thanks for watching video.